everyone. Now, I would like to invite Madam Principal Dr. Satinder Kaur ji to formally welcome our chief guest. Respected source person of the day, Dr. Vinder Singh ji, ਉਹਨਾਂ ਦੀ sister, faculty members and dear most students, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫॉर ਵਿਮਨ ਸਿੱਧਵਾਂ ਖੁਰਦ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਨਿੱਘੀਆਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਨਾ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਬਾਤ ਬਣੀ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਭਾਵੇਂ ਤਿਸ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਮ ਆਪਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਅੰਕਮ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਪਰੰਤੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਔਰ ਟੈਟ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ डिजिटल ते डाटा जड़ा विभाग है उन्होंने हैड है। और सब तो ज़्यादा खुशी इन्होंने मिलके उदों हुई कि जदों तो मिले हाँ ये अपनी माँ बोली दे अपनी माँ जिहड़ी धरती है इन्हां दी ਉਹਦੇ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤਾਜ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਣ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਕਸਦ ਇਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਫਿਗਰ ਹੀ ਨੇ ਹੋਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਆਉਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁੱਝ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਓ। 2 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। परंतु इन्होंने सानू निराश नहीं किया। थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर थोड़ा जिहा मैं आपको अपनी संस्था बारे दसना चाहांगी। साडी ये संस्था बहुत पुरानी है। ये 19वीं सदी की गल है। इस पिंड के एक किसान ते वैद सीगे भाई नारायण सिंह जी। उन्होंने कोल गुरु दियां बख्शियां 2 दाता सीगियां, एक उन्होंने बेटा और एक बेटिया। बेटे की समहाउ डेथ हो गई छोटी उम्रे, पर बेटा उस छोटी उम्रे ब्याह होया सी। उन्हें वो अपने पीछे एक विडो छड्ड गए
और उन्होंने एक बिटिया सी। भाई साहब को जायदाद अच्छी सी कि सरदार साहब की उपाधि नाल गोरिया ने उन्होंने जिहड़ा सी सन्मानित किया होया सी। तो जो बेटे की डेथ तो बाद जिवें एक बजुर्ग बुझ जाते हैं वो बुझ गए, उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाना शुरू कर दिया। तो लोगों ने उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि गलत है। उन्होंने तब एक जो ग्राउंड दवावांगे कॉलेज का तो एक गुरुद्वारा साहिब है साडे उत्थे एक ना मालबरी उत्थे एक तूत दा शायद तूत दा रुख हुंदा सी, उहदे थल्ले 4 कुड़ियां नूं लैके उन्होंने नाल पिंड दियां एक दो लै लिया। पिंड वाले बड़ी विरोधता की पर भाई साहब ने वो अपना मिशन जारी रखा, बिटिया पढ़ाई। बिटिया का नाम बीबी हरप्रकाश कौर, बेटे का नाम भाई उजागर सिंह जी, काका उजागर सिंह जी कहते हैं उन्होंने क्योंकि छोटी उम्र चल रही सी। और उन्होंने फिर बिटिया पढ़ाई। गुरु का भाव इदा था कि बिटिया जिथे मैरिज हुई बिटिया के हसबैंड की भी डेथ हो गई, औलाद हुई औलाद भी नहीं सर्वाइव कर पाई। तो फिर उन्होंने अपना बिटिया ने भी एक मिशन अडॉप्ट कर लिया, बना लिया अपनी जिंदगी का कि मैं विमेन इंपावरमेंट को अपनी जिंदगी देनी है। तो वो अपने फादर को लेते सिद्धवा खुर्दी आ गए। आके उन्होंने इतों सब तो पहला 1909 एक सिख गर्ल स्कूल खोलिया एफिलिएशन लई और नाल ही एक ट्रस्ट बना लिया श्री गुरु हरगोबिंद ते अपने मदर भरा का नाम लगा लिया उजागर हरी ट्रस्ट। और ये धरती इन्नी जी पावन है कि इतने धन धन छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह ने खुद विजिट किया इस धरती से। उन्होंने फिर छेवीं पातशाही का नाम अपने भरा के नाम के अगे लगाया और इतने एक ट्रस्ट बनाया। और उस ट्रस्ट के जड़ियाँ बच्चियां को फीस नहीं ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ नहीं पढ़ सकते सी, विरोधता इलाके वालों बहुत हुई पर उन्होंने छड्या नहीं अपना मिशन। वो स्कूल चलिया 1909 तो फिर उस तो बाद 1950 उन्होंने इतने ही एक वाला साडा खालसा कॉलेज फॉर वुमेन खोलिया। फिर नाल ही एजुकेशन कॉलेज साडे नाल ही इत्थे उदा ना गुरु हरगोबिंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन है। इस तरह ही फिर एक पब्लिक स्कूल खोलिया, फिर इतने लॉ कॉलेज खोलिया, हुण असीं फार्मेसी कॉलेज इस सैशन तो शुरुआत करन जा रहे हैं। अल्टीमेटली साडी जिहड़ी मैनेजमेंट है ये साडे दे मैंबर डॉक्टर सारी मैनेजमेंट बिना साढ़े को जितने भी साढ़े ट्रस्ट के मैंबर्स है, प्रधान है, सैकटरी है, एक भी रुपया ना तो चाह पानी का ना अपनी गड्डी का ना रहन सहन का कुछ भी साड़ी संस्थावां को नहीं लेंदे, सगों अपनी देन या अपनी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, वॉलंटियरली देते हैं और अपनी पॉकेट विचों भी ये साड़ियां संस्थावां को कुछ थोड़ा बहुत जिन्ना ये दे सकते हैं देते रहते हैं। और सिक्खी सिद्धांतां नूं ये जिहड़ियां तरजीह दिंदे आ और हमेशा ही बच्चों के विच नैतिक गुण सानू फोकस किया जाता है। इन्हां वल्लों हदायतां दित्तियां जांदियां कि बच्चों नूं पंजाब पंजाबीयत ते नैतिकता दे नाल जोड़ के रखिया जाए। बच्चों नूं उन्हां दे गुरुआं दी जिहड़ी हिस्टरी है, गुरबाणी की महत्ता है, उन्होंने बारे दसिया जाए तां जो बच्चे अपने मूल नाल जुड़े रहन। तो ये साडी मैनेजमेंट का भी मिशन है, असीं भी ये मिशन नाल अगे लैके चलते हैं। तो तुहाडा इस पावन धरती ते एक मिशन वाली संस्था दे विच पहुंचण ते अपने फिर तो मैनेजमेंट वालों अपने विभाग के सारे फैकल्टी मैंबर्स वालों ते विद्यार्थियों वालों मैं तुहानूं निघा जी आया आखदी हां, धन्नवाद करदी हां तुहाडा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। Thank you, ma'am. Now, I would like to extend the heartiest welcome to Sardar Jameel Singh Ji Sidhu, member Shri Guru Hargobind Ujagar Hari Trust, Sidhwa Khurd. Welcome, sir. And now I would like to invite Mrs. Jaspreet Kaur from Department of Computer Science and Application to introduce our guest. Good morning to one and all. On behalf of our worthy management, respected principal, staff,
members and students, it is my honor and privilege to extend a heartfelt welcome to our esteemed Chief Guest, Dr. Ravinder Singh. Dr. Singh is a visionary leader in the world of digital transformation with over 30 years of exceptional experience spanning government, finance, and technology sectors. Currently serving as the head of Digital and Systems team at the UK Government Commercial Function, he has been instrumental in deriving innovative digital solutions. His academic achievements are equally impressive with PhD in Informatics from King's College London, an MBA in Information Technology, and advanced degrees in Electrical Engineering. Dr. Singh holds 2 software copyrights and has published 14 research papers. He is the co-author of the book, A Model-Driven Business Process Engineering, published by Amazon and Bentham Science. Additionally, he has been nominated for Shri Dewan Mehta National Award for Innovation in Information Technology. As the Modernizing Technology Program Manager at the UK Cabinet Office, he led national strategies for emerging technologies, earning global recognition for innovation. He has advised governments across 4 continents on digital transformation. In private sector, Dr. Singh held leadership roles at JP Morgan Chase, Accenture, and Capco, driving multi-million-dollar transformations and cost saving. Today, we are truly privileged to have Dr. Ravinder Singh with us, a leader who embodies the perfect blend of academic excellence, technical mastery, and strategic vision. His presence here is a source of immense inspiration for all of us, and we are eager to learn from his vast experiences. Once again, a warm welcome to you, sir. We are delighted and honored to have you here with us today. Now, I would like to invite Dr. Ravinder Singh to the stage to share his insights with us about artificial intelligence. Please, sir. Are you able to see it? Yes. Lights off. Oh. Lights off. Good morning to everyone. Good morning, sir. I'm really humbled by all the nice words which everyone has said about me. And thanks to Dr. Silinder Kaur, Mr. Harmeet Singh, and all the faculty members who have made this effort. As the principal has said initially, I refused because it was not that I didn't want to come. It was because when you come here to India, you have a very small time with you, and then there are lots of things to be done. So that's why it was a bit of a challenge to find that slot. And I thought it is good that I have to go to the Darbar Sahib, so I will go via college. So after this, I am going to the Darbar Sahib to do my mathematics and seek the blessings. So I thought it would be a good way of managing my time effectively.
So, जिस तरह मैडम ने किया कि I will go in Punjabi and Hindi. हाँ जी कि ये कोई भी किसी इनपुट होना please do study hard. और एक source of inspiration है प्रकाश कौर जी जिन्होंने पद्म श्री 1961 में गया बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होना चाहिए कि उस टाइम पे लड़कियां को पढ़न नहीं दिता जाता सी उन्होंने एक एफर्ट की थी अपने को बहुत मिसाल आनियां बाद दे विच दंगल फिल्म सारे ने देखी है कि उनके फादर ने किस तरह स्ट्रगल की उन्होंने चारे खड़ा कुर्सी दे विच टेल लिया तो हमेशा अपने माइंड में रखो कि स्ट्रगल्स थोड़ी जिंदगी दे विच और किया बट उन्होंने ओवरकम जरूर करें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें तुम ओवरकम नहीं कर सकते थोड़े को थोड़े टीचर्स है गुरु है गुरु ग्रंथ साहब है थोड़ी गाइडेंस लेगी क्योंकि मैं जिलावा तक डेरे वाले थोड़ा खिलाफ है क्योंकि थोड़े को अपना गुरु ग्रंथ साहिब है जिस तो तुसी ब्लेसिंग्स गाइडेंस कुछ भी सीख कर सकते हो वो बाबे भी वही पढ़ के थोड़ी सुना रहे हैं तुसी आप भी वही पढ़ रहे हैं मैं उस टॉपिक के बाद चाहूँगा स्लाइडली करना थोड़ा इससे गल कर रही कि लेट्स सीक द ब्लेसिंग कोई प्रॉब्लम कोई चैलेंज कुछ भी आवे तो गुरु ग्रंथ साहिब तो हमें मिल जाएगा So, before going from here to UK, I was working in CDAC Mohali. Then I worked in the private sector before joining the civil services. Okay, civil services which ये लाके चले के दूसरी कंट्री में लिचूंगा डिस्क्रिमिनेशन कोई की कितने भी होंगे वो बाइसिक चलेगी अब उसने भी हमारे इस टॉपिक पे क्योंकि being a Sikh, immediately recognized, second being a baptized Sikh, अमृतधारी होने करके एक और step forward आता है। So, पर वो challenge कोई बड़ा challenge नहीं होता, ये थोड़े गुण है, थोड़ी knowledge है, you will be able to succeed. So let's come to the topic, क्योंकि this is kind of a topic which probably is essential for everyone nowadays. I won't take much of the time, we will finish by 11:15. So you can see AI is kind of taking over the world. But what is the challenge इतना शुरू होता है कि सारा जो डेटा increase हुआ from 2010 there is those zettabytes and 2025 there is around 181 zettabytes. Zettabyte is 10 raised to power 21. Right? So zettabyte is around 10 raised to power 21. So इतना data generate हो गया and क्यों ये change है? Because we have got a computational power which is higher and it is cost effective. Now we have computers which are available at a lesser cost which can process faster. That's why AI is taking over or trying to take over. Because machine learning is quicker, results can be processed faster, data can be processed faster. AI machine learning has been in since 1940s, 50s, 60s, as during gave this statement, when AI will surpass human. वो statement हल्ले भी true नहीं हुई। उन्हें 1950s से जो statement is. So if you think from that angle, so we are able to generate, use more data. So data की आर्थ हो रहा। It is all from us.
right? We are generating that data. 5.9 billion Google searches, 1.4 million Tinder swipes, right or left, whatever. 42 billion, around 42 billion WhatsApp messages, TikTok videos, 167 million TikTok videos are uploaded every minute. शायद तुझे सारे देखते ही होंगे, Instagram भी यूज करते होंगे. How many of you are using TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook? Everyone, right? Everyone is using. So see, we are all generating that data. We are part of the data generation. So that is every minute of the day. So think of how much data it is. And if you see the data, I don't know whether you are able to read it or not at the end. But something of it, so more than 50% of your data is still videos. Right? More than 50% of your data is still videos. So that's the kind of data which we are generating. How many of you are using ChatGPT? Everyone installed on your smartphones? Good. So let's say, just one small example. If you try to open up your smartphone, ChatGPT, and write this sentence in that. Create an image of 3 friends enjoying coffee at Starbucks. Apna phone, can you open up your phone please on ChatGPT? Can you open up your ChatGPT and type in this sentence? I just want to show you what it is. Image आया किसी ने? Hopefully internet is working good enough. Anybody got an image? कोई इमेज आया? कौन सा? ChatGPT फ्री है कुछ भी आया? आया? क्या आया? Anybody got the image? Everyone, right? So what is that image? It's all white Western people. Right? It's all white Western people. Similar to something like this, right? Maybe some common distinction. So what does it show you? Right? If you write the same 3 friends enjoying coffee at university, probably you will get similar. Again, white Western people. So what is it? You are sitting in India, searching in India, but it is still showing you white Western people. Whether boy or a girl, it doesn't matter to me at all. Right? But it is white Western people. Why it has happened? Anybody would like to answer? क्यों है क्यों? Because the data which it has got, because ChatGPT searches the data which is the data available in the public domain, in Wikipedia or everywhere, and still most of the data is still the data from the West. Even though we can call ourselves, we are 1.4 billion people, or Southeast Asia, if we take, is much bigger, but still we don't have the data because we are still not on digital that much. And if you now write, create an image of 3 Indian friends at Starbucks, probably you will get something like that. But I have given it a context
Indian friends data. But still it may not be true. Because sometimes you will get with the person with a sherwani or with a sari or with something else there, which may not be true. Because that is the domain which is still available. But it tries to pick some of the data from the official site which has those images. Right? So that this data is biased. Biasing Abi. So it's not the humans only that discriminate. Digital can also discriminate. Unless it is properly trained. That is why any AI system, if it has to work, you have to train that system correctly. So this is another one showing you the racial and gender bias. This is actual output from the Compass system, which is deployed by US to rate the criminals. That is, this is a high-risk criminal, this is a low-risk, medium-risk criminal. But see, I don't know whether you are able to read it. The white person has done crimes, attempted robberies, 2 armed robberies, but still he is rated as low risk. But this black person on the right has done only 1 petty offense, and still he is rated at high risk. Similarly, on the second image, the first person has done drug trafficking, the other person has done some petty theft. Still he is rated high. This is the actual output from the US system. That's where the racial bias starts coming up. Because of your color, or your ethnicity, or the Thukti Ayo, एक Indian है, एक Sikh है, एक Musliman है, तीनों में रेट करना इस तरह. So I can train the system to do the bias also, right? That is a challenge which we have got now. That I can train the system to do the bias, and I can also train the system not to do the bias. So be careful. That is why the machine learning is very, very important. That is why the ChatGPT is kind of, as we always say, it's like a small child. The child is born in a family. He or she doesn't know how to speak. Right? Initial language doesn't know. Then whatever language is spoken at home, the child picks up that. If you are a Punjabi family or a family from UP or family from Maharashtra or England, so the child will become learning. If it is English speaking parents, it will start speaking English. If you are Punjabi speaking, you will start speaking Punjabi. Okay? So बच्चा उसका ग्रो करना शुरू कर देगा. So same is happening with that movement with all the ChatGPT, Google Gemini, and others. They are all learning, DeepSeek. They are all learning at now. But ChatGPT had an advantage, but they had 4-5 years of work behind. Before they launched in November 2022, sorry. They worked 5 years, have done their research, done the data. And still, the free version doesn't have that kind of data which the paid version has. Right? That is a challenge which we need to think of. So be careful. So that is why training is very, very important in anywhere, in any system, in any digital system. Training can be supervised learning, unsupervised, passive learning, active learning, reinforced learning. There are so many techniques. So you have to be very careful that how you train your system, train your model. Right? That's what we always say. So there is a lack of data diversity, bias, limited geographic diversity. So how do you plan to put that data? Right? So think of whenever you are building a system, mostly accordingly data. So it is not the volume of data. Okay?
but data अनेक gigabytes इकट्ठा कर रहे हैं, right? You have to think कि there is a variety of data. कि जब मैं कहूँ कि पंजाब में which let's say food habits that मैं data collect कर रहे हैं. The food habits change from let's say Chandigarh to Amritsar, and similarly on the other side from Pathankot to if I go to Firozpur. Slight bit of change is there. Dialects change. Paji, Virji, Baiji. They are the same thing. Just Paji probably in Doaba, Virji in Balwa. Right? So all these things, Pamacha region, so these things start coming up. So who will tell that system? So it's us as a computers people or data people, we tell the computer that this person could be from this area. So data can always lie also. We always say statistics is or data is how we represent it. Just to give you a very simple example. The minister goes to the school says there is a 100% rise in admission from the previous year. Right? There was earlier one student, now we have 2 students. ये लिखा है डेटा ट्रैक छूटता नहीं बोल रहे but मैं डेटा छुपा दी है. Right? So what is the sample size? So sampling is very, very important. Right? For any machine learning system, AI can work if your machine learning component is better. So we always say, from data analytics, you have to move into data science. Okay. It is overlap between the two, very thin line between the two, but there is also overlap. Different algorithms for data science. So if you people, ये मैं लगावा कि एक ना सोचो कि you have to be a computer scientist or you have to do a computer degree to work in this area. No. We have people who are MA Geography, MA History, they are working with us for graduation in different subjects. Because they know their field. We want those people also to work on the data on that side. So you can work if you have a logical mind, rational mind to solve a problem. That if you can break down the problem into number of steps, which you can feed into computer to solve it. Right? So if you can, like Google Map, it gives you that okay, if I have to go from here to Chandigarh or Delhi or wherever, it tells you the different routes are available. And then you are going by a train, by a car, or by walk, or by cycle, what you want to do. It can calculate differently. Right? Similarly, we need those people, functional people, accounting people, other people, who can tell the computer what to do. And what are those steps to do? If you can write from step 1 to step 10, that this is how the problem is solved, then probably that's what we need to. Right? That we need to. That this is how you solve the problem. And there is a different come to that. So there are different technologies which we would like to introduce to you, which are emerging technologies which you can use. From 5G, we are talking of 6G, Internet of Things, hyper-automation, robotic process automation, quantum computing. They are all emerging technologies you can work on. And there are many opportunities which are available to you. That's a big challenge now. So each technology will provide you another opportunity to work on. This presentation is there with your teachers, you can take it from them, but read it afterwards if you are not able to read it.
So, you can use deep learning, you can use IoT, you can use predictive analysis. So all these technologies are to assist you. AI is not going to replace jobs, it's going to replace some jobs, but the job will be differently available. Like the COVID, we thought, oh, people don't have jobs, people are at home, how will they survive? They survive. Right? Human race knows how to adapt to new things. You will adapt to those things. To try to learn these techniques which will benefit you. So this is what we think the future is. Digital IT, data integration, quantum computing, 5G, predictive analysis in social sciences, automation, AI integration. And this is what we need people like you. So जो बाहर जाना है, पढ़ो, जरूर पढ़ो, इधर भी रहना है, opportunities बहुत हैं. India is growing hub for technology. Also, you can work on different things, whichever you want, but you have to work hard so that you are ahead of others. So we always say, this is how you deploy the technology. That you take the problem, take the data according to it, classify that problem, and then process the data, model the problem. The 3 steps, 2, 3, and 4, will take maximum of your time. Around 60 to 70% of your time will be in those 3 activities. Why? Because if you model the problem, you provide the actual algorithm, then you will get to know that yes, this is how to solve the problem. Because you have to choose the right model, right algorithm. You can always search for the algorithms, categorization, simplification, hidden barcode, Ishikiba. There are so many things. They are all available on net. I am here to inspire you to learn that he told us this, let's search for this. But TikTok videos ही ना देखते थे सारा. लोग भी कभी-कभी ठीक है, but हमेशा वो करते नहीं. But this is not a process which we say, it's a continuous process. How the machine learns? That once it has solved, now get more data, and then go on refining the system. So that's where machine learning automatically, then it giving the intelligence to the machine. That's where we call it artificial intelligence. Instead of a human, machine is able to decide. And not here. वो तो कुछ खास नहीं है मशीन, but for that machine has to learn. वो टाइम तो हमको देना पड़ेगा, वो मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा. You have to give the training data, give that actual data, train it, see what outcomes are, again and again, go on refining, go on teaching the machine that no, this is not right, this is not. So the machine ultimately will be good enough to say, after a few months or few years, depending on how large the system is, give you the actual output where new human intervention is required. Because currently, all the systems which you are having, they have a hallucination, misinformation. Like I have just shown you one simple example of creating an image. Because the data is bad, so you can train the system. That this is not right, this is not right. Reinforced learning. If आप बच्चे को बार-बार सिखाने हैं कि this is how A is written, B is written, A, B, C, D और पूरा जो भी आप सिखाने हैं, बच्चा बार-बार वो लिखता है. Then it learns. Right? Same with the machine. Think the machine in the same way. The machine will learn करना है. So all the systems which are currently, we always say whatever you are searching in ChatGPT, DeepSeek or Google Gemini or Copilot,
they are all giving you some post references. 30 to 40% references are post references. अगर तुम लोग write a paper on this, it will create some references. Try to be more intelligent. So always check what the output it is giving you. You will find those references never exist in the real world. Right? तो जब कहते हैं बच्चा जो बोलता है कि मैं आज कितना वो same exactly the same way. So that is where the challenge lies with you. That you take the information, process it, and tell the machine this is not right. And then next time ChatGPT will remember that because they are building their database. That's all you know. This is not happening. This is not right. This is false. This is right. This is wrong. And then it can distinguish between the right and wrong. So this is what we call challenges and consideration, data privacy, security, ethical use, because ethically we have to use. Like I have shown you, the compass system giving the right wrong information to the lawmakers, integration complexity, skill development we require, and always what are the best practices to implement. We always say, start small, scale fast. कोई भी project करो, let's say it's an elephant in the room as we call it, to solve. Break down the problem into small bits. ठीक है ना? काफी अपना बनाने हैं, एक दिन से नहीं खड़ा करनी पड़ेगी. कॉलेज बने एक दिन से नहीं खड़ी होगी ना. प्लानिंग होती है, ये पहला फाउंडेशन आएगी, फिर दीवारें खड़ियाँ होंगी, फिर छत पड़ेगी, फिर इलेक्ट्रिसिटी, प्लम्बिंग, पेंट, दरवाजे, खिड़कियाँ. It takes time. So break the problem into small bits. So it's a kind of break down and conquer, as we call it. ये छोटे pieces करके achieve करो, फिर go on achieving on building blocks, as we call it. Scale fast. That is initially some product, then go on adding some new features, functionalities into it. Like you have so many apps which you are using, every few weeks you get a new update on those apps. Why? Because they have added a new feature, functionality, or a security aspect, or anything else. Right? And that's how we do it. And we always say fail fast. That's how we teach our civil servants in UK also. Fail fast. Right? This is a strange term in India. Fail होना है. The challenge is if you don't fail now, you won't try a different method. Right? Fail fast means I am trying my best to achieve it. But if this way is not working, I will change my way of working. Then if I'm doing the same thing, then my output will be the same. You go on making the same mistakes, same output. You change the working, output will be changed. Okay? That's why we say fail fast. That is, learn from your mistake and move on. Don't break on that. Oh, I fail again. Right? It's those people who rise, who learn from their mistakes and do another go. Like Thomas Alva Edison, which we give example. Right? जो लोग उन्हें बल्ब बनाना सी पहली बारी 10,000 times he failed. जब सोच के देखो 10,000 बारी तो उसको तो ट्राई करोगे इस चीज में 10,000 बारी बता फेल हो रहे हैं. Still he is working. नहीं तो बनाना है, करना है. And that's why we have electricity. Right? A bulb. Now, or now it is changed a bit. But his principles are working. So think of 10,000 times failing in one thing, but still not demotivating himself. KFC person, right? Can get a deprived person. He went
with his recipe at the age of 65. 65 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ KFC ਬ੍ਰਾਂਡ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ। 1000 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਮੇਰੀ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਲੈ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। And now see where it is. So it's not the failure should not deter you. Failure should inspire you to work hard, work differently. Right? ये जिंदगी च याद रखो, जिहड़ा फेल नहीं होएगा वो प्रोग्रेस भी नहीं करेगा। सारे फेल होए अपने काम च, ऐसा कोई नहीं है कि जिहड़ा नहीं होएगा। So think of that your design should be user-centric. Key business need, key customers, which clients are trying to address. Continuous evaluation, collaborate, improve partnerships. If somebody has worked in that area, work with that person, learn from that person. You know, if I am trying to do a business in one area, or I want to apply for IES or civil services in India, then, okay, what should I do? Okay, this person has cleared the exam. I should go and approach that person, how he did it, how he or she had done it. Learn from them. They may give you some tips. So, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ, ਪਰ ਟਿਪਸ ਦੇ ਸਕੇ। So think from that angle, and that's the best practices you should adopt. And ethical consideration, which I have already said, you should be making the system fair, which is useful, used by everyone, and it gives neutral outputs. It is not biased. So there are regulations, there are fairness indexes which have come up and use them. There are standards now. Countries are trying to build up. Try to use that. Right? So, any question which you would like to ask? Well, I can go on in this, but that's where I have given the references also for you to learn. So, take this presentation from your teachers, which will be helpful to you, and then search in your free time if you want to work in this area, so that you are able to use this and improve yourself. Any questions? Well, you would like to ask? But that means you कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब कुछ समझ आ गया है, कुछ नहीं आया। Okay, thank you very much. Thank you, sir. It was really a thought-provoking presentation. You have explained how the data is generated and how the machines are learned. You have also told us how the machines should be trained, like the data should be unbiased. So you have truly enlightened us. Thank you so much. So now it's time to honor our chief guest. So I would like to invite Sardar Harmil Singh Ji Sidhu, member, Shri Guru Hargobind Ujagar Hari Trust, and our respected principal ma'am, Dr. Satinder Kaur Ji, to please escort our guest on the stage, and the senior faculty members, Dr. Navdeep Kaur, Dr. Gagandeep Tarni, Ms. Rupa Kaur Rai, and Dr. Indrajit Kaur. And I would also like to invite Mrs. Manjeet Kaur, sister of Dr. Ravinder Singh Ji, who have joined us today.
I also invite the faculty of Computer Science Department. So, Red Ribbon Club and Red Cross Society has organized poster making and slogan writing competitions on HIV/AIDS, drugs and blood donation. So, we are going to distribute the prizes to students. First, slogan writing competition. The first prize goes to Gagandeep Kaur from BA second year. Second prize goes to Malika Thakur from BA second year. And third prize goes to Prince Deep from BA first year. Prince Deep Kaur, and the consolation prize goes to Prince Deep Kaur from BA first year. And in poster making competition, first prize goes to Taranpreet Kaur from BCA first year. Second prize goes to Muskan Preet Kaur from BSc third year non-medical. And third prize goes to Jaspreet Kaur from BCom first. Taranpreet Kaur, BCA second year. Muskan Preet Kaur, BSc third. And students, please come for the group photo.
है उन्होंने सीखने का मौका मिलता है। वो अपने अनमोल खजाने को जिन्ना छोड़ना ने और कुछ सीखा होता है वो सारे बड़े सच्चे तरीके तुम्हारा पेश कर रहे हैं। डॉक्टर विंदर सिंह जी मैं उन्होंने ज्ञान को थोड़ा प्रभाव इतना सारा ज्ञान इकट्ठा किया होया दुनिया जी संस्थावां दे विच काम कर रहे हैं। जमाना बहुत बदल गया और ये जमाने की जरूरत है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चीज़ा काटा आ रही ने सारी नवी साइंस की ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਰਸਰਾ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਸਕੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ प्रार्थना का ज्ञान जो होर कुछ ज्ञान है सारा जो ड्रामे लिए बहुत बढ़िया है और वो सानू सीखना और सीखने की सानू बहुत जरूरत है। और उत्थे असी इस ज्ञान की चकाचौंध दे विच अपने आप को नहीं भूल जाना। ये ध्यान रखना कि मैं कितों आया कितों उपजे कहा है यात्रा की संक्षेप महाराज ने दसिया। तो मैं डॉक्टर विंदर सिंह जी के पत्नी जी का बहुत सिस्टर का बहुत जिन्होंने इतने आके मुझे खजाने साढ़े बच्चों के नाल बहुत बहुत Thank you, sir. So now I would like to invite Dr. Navneet Kaur for formal thanks. International seminar, I deem it honor and to propose a formal vote of thanks to our worthy resource person, Dr. Vinder Singh. Dr. Vinder Singh is a civil servant, UK at digital service. Very much for your thought-provoking lecture. मैंने उम्मीद है कि साथियों ने ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣਾ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिथे मनुष्य जीवन को बहुत ज्यादा सुखाला बना रही है उसे बहुत सारी पैदा कर रही है। जिस तरह कि जानते हैं कि कोई भी होती है वो तो ज्यादा रेट या पावरफुल नहीं हो सकती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है ये मनुष्य के दिमाग की ही बनाई गई है। तो मनुष्य का दिमाग जो है मशीनों तो ज्यादा पावरफुल है। मनुष्य को अज मशीनों के ऊपर ज्यादा निर्भर कर रही है, सुखाला बना रही है। दूसरे पासे बहुत सारिया चौथियां मनुष्य के विचों भावनात्मक जी सूझबूझ कर रही है। अपने समय की लोड़ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वरतों मनुष्य को ज्यादा सुखाला बनाने के लिए की जाए। इसकी वरतों जेकर असीं सही बहुत सुखाला बनाती है, पर दूसरे पासे एक जिवें कि बेरोजगारी या कई थावां ते रोजगार के मौके और दूसरे पासे नवे मौके पैदा कर रही है।
स्टैनफोर्ड प्रोफेसर एंड्रयू का कहना है कि जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिन्हें की कुछ साल पहला बिजली सी इलैक्ट्रिसिटी जिन्हें उसने बदलिया अज ये भी साडे जीवन के विच उसी तरह तब्दीली ले आई है। तो बहुत सारा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बारे दसिया है। पूरी उम्मीद है कि विद्यार्थी इस पर बहुत ज़्यादा जानकारी लेंगे कि उन्होंने लिए लाए सानू मिल के बहुत वधिया लगा कि साथ लगते नहीं उत्थे ही पंजाबियत अपने सभ्याचार के नाल जुड़ी हुई शख्सियत हैं। सामने अपने दूसरे जैसे एडिसन या KFC के एग्जाम्पल के विद्यार्थियों को कि उन्होंने किस तरह बार बार है सीखने की कोशिश तो डरना नहीं फेलियर तो सीखने की कोशिश करनी है। लेक्चर से बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग थी कि इन्होंने जो शख्सियत है बहुत महान सर कि विद्यार्थी मतलब बहुत कुछ सीखेंगे। इसी बहुत धन्यवाद हाँ इन्होंने सिस्टर सरदारनी मनजीत कौर जी की जिन्होंने बहुत ही कीमती समय के साढ़े लिए समा कढ़िया। मैं बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद ट्रस्ट मैंबर डॉक्टर हरमेल सिंह सिद्धू जी का सर बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देंगे नहीं साढ़े एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ हाँ गाइड करते हैं। तो मैं बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद हाँ साढ़े प्रिंसीपल सुंदर कौर जी की जिन्हों की योग रहनमाई के असीं बहुत बड़े समय के एक इंटरनेशनल सैमीनार आयोजित किया है। बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हाँ साढ़े कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट सारे ही स्टाफ मेंबर्स के विद्यार्थियों का धन्यवाद करती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिथे ही बहुत है मनुख के कई तरह के जज्बे है घट रहे हैं। एंड मैं ही कहा कि इस तो पहला की जी AI है जो इंटेलिजेंस है कि एल्गोरिथम ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ अमर है मन को ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। Thank you so much, ma'am. So we have an important for the students. Now we will have the 7th lecture at 11:40.